फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेक्सपियर्स थिएटर। ओके, शेक्सपियर के वक्त में थिएटर कैसा था और ख़ासकर शेक्सपियर के बारे में हम शेक्सपियर के थिएटर के बारे में हम बात करेंगे। ओके, इस वीडियो में तो वीडियो आपको फ़ायदा देगा बहुत, तो वीडियो को देखिए आखिर तक। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो शेक्सपियर्स थिएटर, तो ये स्लाइड्स है चंद और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले शेक्सपियर थिएटर में सबसे पहले बात करते हैं रिचर्ड बर्बैक की। अब रिचर्ड बर्बैक कौन था, इसके बारे में पहले बात करते हैं। रिचर्ड बर्बैक, तो रिचर्ड बर्बैक कौन था। रिचर्ड बर्बैक was the leading actor in लॉर्ड चैम्बरलेन्स किंग्समैन। ओके, इसमें वो एक लीडिंग एक्टर थे, रिचर्ड बर्बैक। ओके, एंड ही प्लेड मोस्ट ऑफ द ड्रामेटिक लीड्स उन्होंने कौन कौन से शेक्सपियर के ड्रामाज में किए थे। रिचर्ड III में, हैमलेट में, किंग लियर में और ओथेलो में। ओके, और हैमलेट, किंग लियर और ओथेलो, these are considered the best tragedies of Shakespeare as well. ओके, तो इन ड्रामाज में उन्होंने लीडिंग वर्क किया है। He was a dramatic lead in these dramas of Shakespeare. He may have begun his career at 16 years. ये बात आप उनके बारे में, रिचर्ड बर्बैक के बारे में याद रखिए कि he may have began his career at the age of 16 and continued to perform until his death. Okay, he was the son of James Berwick. He was the son of James Berwick who constructed the theatre, जो कि थिएटर बनाते थे। ये जेम्स बर्बैक का बेटा था, रिचर्ड बर्बैक। ओके, he and his brother Cuthbert कौन थे। He and his brother Cuthbert own half of the ग्लोब थिएटर का नाम तो आपने सुना हुआ होगा, जिनके हिस्सेदार शेक्सपियर ख़ुद भी थे ग्लोब थिएटर की। और वो और उनके जो भाई थे, हाफ ऑफ द ग्लोब थिएटर ये उनका था। ओके, ग्लोब थिएटर को के बारे में आप याद रखें कि दैट वाज क्रिएटेड इन 1998, राउंड अबाउट 1598। ओके, 1598 के ख्वाहिशा ये बनाई गई थी। बाज़ कहीं पर 1599 दिखाया गया हुआ होता है और कहीं पर 1598 किया हुआ होता है। ओके, so although he did not achieve the financial success of Shakespeare, Richard did manage to leave his modest estate of £300. To put that into the perspective, actors were usually paid about £18 yearly. Okay, तो ये आप याद रखें। अब एक और एक्टर है, ओके, उनके बारे में बात करते हैं। उनका नाम है जॉन हेमिंग्स। ओके, ये शेक्सपियर के ज़माने में आते हैं, तो इसीलिए आपने उनके नाम और उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात इन लोगों के बारे में याद रखनी है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि शेक्सपियर वाज बॉर्न ऑन 1564 एंड ही इज़ बॉर्न इन 1556, तो हम असर है। ओके, they are contemporaries. Okay, they are all. So John Hemmings was an actor and financial manager of Lord's Chamberlains. इस थिएटर के financial manager थे किंग्समैन के। ओके, so he was the joint editor of the first folio. Joint editor of the first folio. शेक्सपियर की जो फर्स्ट फोलियो थी उनके वो जॉइंट एडिटर थे। ओके, हेमिंग एंड कॉन्डल। ओके, इन दोनों के बारे में आप याद रखिए कि जो फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर थी जो कि 1623 में आई थी, इन दोनों ने उसमें काम किया था और उनको पब्लिश किया था। ओके, फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर, जिनमें एक ड्रामा नहीं था उस फोलियो में, और उस शेक्सपियर के उस ड्रामे का नाम था पेरिक्लीस। ओके, ये दिस वाज द ओनली ड्रामा दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर। ओके, तो हेमिंग का नाम फर्स्ट फोलियो में आता है क्योंकि उन्होंने उस फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर को उन्होंने वो पब्लिश किया था। He was believed to have played the part of the Falstaff
character of King Henry IV and Merry Wives of Windsor। तो इन ड्रामाज में उन्होंने पार्ट अपना एक हिस्सा डाला था। ओके, तो अब अगस्टन फिलिप्स की बात करते। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो इसी वजह से that is like this. Okay, so he was one of the first generation of English actors to achieve wealth and a degree of social status by means of his trade. Okay, अपने ट्रेड के जरिए उन्होंने एक wealth और डिग्री ऑफ सोशल स्टेटस हासिल किया था। Okay, so he was one of the first generation of English actors. Okay, first English actors में से है। Okay, he was one of the 6 sharers in the Globe Theatre. शेक्सपियर भी ग्लोब थिएटर में एक शेरर था, और he is also one of those sharer of the Globe Theatre. Okay, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया कि that was built in 1598 to 1599, somewhere around there. Okay, so with a 1/8 share थे उनकी ग्लोब थिएटर में। ओके, 6 शेयर्स थे टोटल, तो उनमें से एक अगस्टन फिलिप्स भी थे। Over time, this made him a comparatively wealthy man, at least as far as Elizabethan actors were concerned. Okay, इस ग्लोब थिएटर के वो शेयर थे, तो इस ओवर द टाइम वो जो है ना एक मालदार शख्स बन गया। अगर हम बात करें ख़ास करके जो एक्टर्स होते थे उस ज़माने के एलिज़ाबेथन एज के, लाइक शेक्सपियर, फिलिप्स lived for many years near his occupation of Southwark and Paris Garden near the Swan Theatre. ओके, वहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है शेक्सपियर की तरह इन जगहों पर जिसके नाम मैंने मेंशन किए। अब और बात करते हैं शेक्सपियर ऑडियंस। अब शेक्सपियर के बारे में आप याद रखिए कि उनके हर किस्म के ऑडियंस थे, उनके जो ड्रामास थे वो हर कोई देखते थे। अब ऐसा नहीं है जो यूनिवर्सिटी वेट्स की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर जो रॉयल्टी थे, अपर क्लास वाले जो लोग थे, वो उनके लिए ड्रामाज लिखते थे। उनकी वर्ड्स ऐसे होती थी कि सिर्फ वो ही समझ पाते थे। लेकिन शेक्सपियर जब आए लंदन में तो उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं किया, सिंपल तरीके से लोगों को समझाना शुरू किया। तो इनके जो ड्रामास थे वो रॉयल्टी को जो लोग थे, जो अपर क्लास वाले लोग थे, मिडिल क्लास वाले, लोअर क्लास वाले लोग, सब पर वो जो है ना उनके ड्रामास देखते थे और उनको समझते थे। और इसी वजह से अगर हम रॉबर्ट ग्रीन की बात करें, सो रॉबर्ट ग्रीन वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा जेलस थे। ओके, शेक्सपियर से। ओके, सो ये बात आप याद रखें कि शेक्सपियर के हर किस्म के लोग जो है ना उनके ऑडियंस थे, जिनमें लेबरर्स आते हैं, वर्कर्स और बिजनेसमैन आते हैं, जेंटलमैन, लॉर्ड्स, क्वीन एलिजाबेथ और जो रॉयल्टी लोग होते थे वो भी उनके ऑडियंस थे, उनके ड्रामास बहुत शौक से देखते थे। ओके, सो अब फर्दर बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय सीटिंग। ओके, सो अब सीटिंग भी होती थी कि कहाँ पे कौन बैठेगा, कहाँ पे कौन बैठेगा। तो लोअर क्लास वाली ग्राउंडिंग्स पर नियर द स्टेज, ओके, कॉस्ट 1 penny। ओके, सो वो ज़मीन पर बैठते थे जो लोअर क्लास वाले लोग होते थे। मिडिल क्लास वाले शेल्टर रेस्ट प्लेटफॉर्म उन पर बैठते थे, 2 pennies। अपर क्लास वाले जेंटलमैन्स रूम एंड लॉर्ड्स रूम, उनके लिए एक रूम्स बनाई गई हुए होते थे, तो वो वहाँ पे बैठते थे और उनसे पैसे भी थोड़े से ज़्यादा उनकी कंपैरिजन पर ली जाती थी, जो कि मिडिल और लोअर क्लास वाले लोग होते थे। अब एटमॉस्फेयर क्या था, माहौल क्या था उस वक्त का? द ऑडियंस वुड ईट, ड्रिंक एंड टॉक थ्रू द परफॉर्मेंस। उनको ये इजाज़त थी कि वो खाए या पिए या बातें करे, वो कुछ भी कर सकते थे जो ऑडियंस होते थे। थिएटर्स वर ओपन एयर एंड यूज नेचुरल लाइट ओपन एयर होते थे
ओके, उनके ऊपर कोई लाइट्स लगी हुई नहीं होते थे, पर नेचुरल लाइट जो कि सन वाली जो रोशनी होती थी, जो कि वो उस ज़माने में जो ड्रामास होते थे वो डे के टाइम पर प्रेजेंट होते थे, तो इसी वजह से दे वर ओपन एयर एंड यूज नेचुरल लाइट, जो सनलाइट होती थी वो यूज़ करते थे एज अ लाइट। ओके, plays were performed in the afternoon in the daylight, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि वो daylight में plays को perform करते थे, dramas को perform करते थे। Plays used very little scenery, instead using language to set the scene। okay, language का use करके scene को सेट किया जाता था, और जो सीनरी होती थी वो ज़्यादातर नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, वो बहुत कम इस्तेमाल की जाती थी। ओके, जो सीनरी होती थी उस वक्त। अब एक्टर्स की बात करें, द एक्टर्स, ओवर 1000 एक्टर्स एंड शेक्सपियर्स प्ले बिटवीन द ईयर 1590s टू इन 1642 आर नोन। बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने शेक्सपियर के ड्रामास को प्रेजेंट किया था। मोस्ट ऑफ देम वर पुअर, although perhaps 20 famous actors required respectable stat। ओके, ज़्यादातर जो होते थे, ज़्यादातर शेक्सपियर के जो एक्टर्स होते थे वो ज़्यादातर गरीब होते थे, पुअर लोग होते थे। द फर्स्ट फोलियो itself includes a list of 26 famous actors। जो फर्स्ट फोलियो आई थी, ओके, उनमें जो 26 फेमस एक्टर्स उन वहाँ पे मेंशन की गई थी, फेमस एक्टर्स। ओके, अब एक्टर्स के चंद नेम्स है यहाँ पे, सम ऑफ द एक्टर्स। ओके, विलियम शेक्सपियर ख़ुद भी एक्ट कर चुके हैं, रिचर्ड बर्बा, जॉन हेमिंग्स, ऑगस्टिन फेलिप्स, विलियम केम्प्ट, थॉमस पूप, बहुत से हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इससे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम ज़्यादा टाइम इन नामों को बता के वेस्ट ना करें। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट राइट नाउ। सो लेट्स गो ऑन। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की थोड़ी सी बात करते हैं। William Shakespeare, as I've told you earlier, that he was born in 1564 and died on 1616। okay, उन्होंने अपनी ज़माने में, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने किसी भी प्ले को ख़ुद पब्लिश नहीं किया था। ओके, वो सिर्फ लिखते थे और परफॉर्म करने के लिए लिखते थे। ओके, टू बी प्रेजेंट इन ऑन स्टेज। ओके, और उनकी जो फर्स्ट पब्लिकेशन आई थी, फर्स्ट फोलियो आई थी, वो आई थी 1623 को, जिसको हम फर्स्ट फोलियो के नाम से याद करते हैं। और ये हेमिंग एंड कॉन्डेल उन्होंने उसको पब्लिश किया था, और उन पर जो प्रेफेस लिखा था फर्स्ट फोलियो पर, वो लिखा था बेन जॉनसन ने। ये नाम आप याद रखिए, ओके, अपने साथ। इट इज़ नॉट नोन एग्जैक्टली हाउ मैनी रोल्स शेक्सपियर प्लेड हिमसेल्फ। अब ये मालूम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो राइटर्स हैं उनके उस ज़माने से पहले या उस ज़माने के ज़्यादा मालूमात उनके बारे में नहीं मालूम नहीं होती है, क्योंकि उनकी लास्ट ईयर्स होते हैं बहुत। ओके, और जो बायोग्राफी का जो सिस्टम था वो आफ्टर प्यूरिटन स्टार्ट हुए हैं। ओके, ज़्यादातर। ओके, शेक्सपियर began his career on the stage by 1592। ओके, 1592 की ख्वाशा उन्होंने स्टेज करियर स्टार्ट किया था, स्टेज पर एक्टिंग करना स्टार्ट किया था। Traditions suggest that Shakespeare played relatively minor parts in his own plays। उन्होंने minor parts किए हैं, ओके, मेजर पार्ट्स नहीं किए थे अपनी प्लेज में। मेनली द पार्ट्स ऑफ ओल्डर मैन। ओके, उन्होंने कौन से, मेनली द पार्ट्स ऑफ ओल्डर मैन, ओल्डर लोगों की एक्टिंग करते थे ज़्यादातर, अपनी जो ड्रामास थे उनमें। ओके, विलियम शेक्सपियर, recent scholarship based on computer analysis of language in Shakespeare's play by Donald Foster purposes that Shakespeare acted in the following selected। अब ये बताते हैं कि शेक्सपियर ने इन ड्रामास में ख़ुद अपनी एक्टिंग की थी, और इन ड्रामास के नाम, शेक्सपियर के उन ड्रामास के नाम ये आप देख सकते हैं: Oswald That Ends Well, The King, As You Like It, Aramin Corin, The Comedy of Errors, Aegeon,
हैमलेट, द गोस्ट, जूलियस सीजर, फ्लेवियस। अब ये जो सामने नाम लिख के गए होते हैं उसकी एक्टिंग शेक्सपियर ने की थी। और ये सारे के सारे उनकी ज़्यादातर ड्रामास है जिसमें उन्होंने ख़ुद एक्टिंग की थी। उन्होंने टोटल जो ड्रामाज लिखे थे वो लिखे थे 37। ओके, 37 प्लेस शेक्सपियर ने लिखे थे ख़ुद। और उनमें से ये चंद मेंशन की गई है जिसमें से उन्होंने ख़ुद एक्टिंग की थी। और किसकी एक्टिंग की थी अगर हम यहाँ पे बात करें, ओथेलो में उन्होंने ब्रेबेंशो उसकी एक्टिंग की है। ओके, यानी वो शख्स शेक्सपियर ने ख़ुद को ज़ाहिर किया है और उनको उन्होंने इस शख्स की एक्टिंग की है ख़ुद स्टेज पे। ओके, रिचर्ड द सेकंड की बात करें तो गॉन एंड द गार्डनर, उनकी एक्टिंग की है शेक्सपियर ने। द एक्टर्स, द यंग। अब एक्टर्स की बात करें, वुमेन फॉरबिडन टू एक्ट इन एलिजाबेथन लॉ। अब ये बात आप याद रखें, ये चीज़ विक्टोरियन एज में भी थी और वहाँ पे भी कि वुमेन को ये इजाज़त नहीं देती कि वो एक्ट करे। ओके, तो वुमेन की जो एक्ट होती थी वो ज़्यादातर जो बॉयज़ होते थे जो कि कम उम्र वाले बॉयज़ होते थे वो प्ले करते थे। ओके, वो सामने हम पढ़ेंगे। फीमेल रोल्स आर प्लेड बाय यंग बॉयज़ एज 13 to 19। ये भी मैंने आपको पहले बताया कि जो फीमेल जो रोल्स होते थे वो यंग बॉयज़ प्ले करते थे बिफोर देयर वॉइसेस ब्रेक, इससे पहले कि उनकी जो वॉइस है वो ज़्यादा बड़े लोगों की तरह हो जाए। ओके, बॉयज़ एक्टर्स लिव्ड विद द एडल्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके, वो एडल्ट मेंबर्स के साथ भी ये लोग रहते थे जो बॉयज़ होते थे, बॉय एक्टर्स होते थे। दे रिसीव्ड vigorous ट्रेनिंग इन almost every aspect of acting। उनकी ऐसी नहीं थी कि उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो नहीं होती थी, उनकी काफ़ी ट्रेनिंग की जाती थी उन बॉयज़ की। ओके, जो यंग बॉयज़ होते थे दिस इंक्लूडेड, उनमें क्या होता था डांसिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, एलोक्यूशन, the study of formal speaking in pronunciation, grammar, style and tone, memorization, weaponry. The little is known about individual boys, no portraits, the only few references survive। Okay, उनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। जो little boys होते थे उनके names के बारे में ज़्यादा। Okay, so the actors young, अभी continued है, there were far fewer boys than men in the companies, which explains where there were few female parts. Okay, transvestites theater, the proper name, ended with the restoration in 1660। इस theater की बात करते हैं कि this was ended with the restoration of in 1660। Okay, when Richard the Second came to England and the monarchy was restored completely in 1660, so this theater was ended. Okay, so when women began appearing in female parts, old timers would reminiscence on the boys Juliet having been the definite portrayal। Okay, Puritans की थोड़ी सी बात करते हैं। So the Puritan clergy viewed the theater as simple as it diverted attention from prayer and claimed that it stimulated boorish lust। Okay, Puritans के बारे में शायद आप जानते होंगे कि ये हर टाइम ये लोग सैड रहते थे। ओके, वो हंसते नहीं थे। जॉन मिल्टन उनमें एक बड़ा वन ऑफ प्यूरिटन्स है। ओके, तो ये लोग हंसते नहीं थे और ये लोग ये कहते थे कि ये जो थिएटर्स होते हैं ये इंसानों को प्रेयर से जुदा करते हैं। ओके, उनकी माइंड्स को डाइवर्ट करते हैं। तो फिलिप स्टब्स, a Puritan leader, Philip Stubbs was also one of the Puritans and one of the leaders of Puritans, okay, was one of the first outspoken. He claimed that all acting troops were secret conclaves of sodomy। Okay, ये बात आप उनकी याद रखिए, that all acting troops were
secret conclaves of sodomy. He was one of the first जिन्होंने ये इस किस्म का बयान दिया. Okay, so the theater dismantle. In 1597, the theaters where Lord Chamberlain's men primarily performed was forced to close because of a dispute with the landlords. Because of this, these were closed, okay, in 1597. James Berwick we have talked about him earlier, the original creator, bought the old Blackfriars Monastery, but the project ground to a halt due to protest. James Berwick died soon after the second February, and the landlord seized the opportunity to try and dismantle the theater. Okay, James Berwick की आप याद रखिए. The Globe Theatre. अब फिर ग्लोब थिएटर के बारे में थोड़ा बात करते हैं. One step ahead of the law, Berwick's son dismantled the theatre themselves. The pieces were hauled across the Thames to the side of Southwark. It took 6 months to rebuild the theatre, and thus the Globe was built. Okay. अब एक बात मैं आपको ग्लोब थिएटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ग्लोब थिएटर में 1613 में आग लगी थी. ओके, 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगी थी. और जब 1613 में उसमें आग लगी थी तो इस वक्त जो ड्रामा प्रेजेंट हो रहा था वो उसका नाम था हेनरी द एट. ओके, ये ड्रामा उस वक्त प्रेजेंट हो रहा था उस थिएटर में. और बात आप याद रखें कि दिस थिएटर वाज रीबिल्ट and 1614. Yes, it was rebuilt in 1614. So ये dates आप याद रखिए अपने साथ ग्लोब थिएटर के बारे में. It was one of the 4 major theaters in that area, along with the Swan Theatre, Rose Theatre, and the Hope Theatre. The open-air 20-sided amphitheater rose 3 stories high with a diameter approximately 100 feet. Its layout was similar, 1,500 to 3,000 audience capacity, to the Colosseum in Rome, 50,000 audience capacity. Okay, the rectangular stage platform on which the plays were performed were nearly 43 feet wide. वो कितने वाइड थे? 43 feet wide and 28 feet deep. Okay, so the Globe Theatre, not one inside picture of the old globe exists. Okay, इसकी one side picture अभी एक भी picture inside की picture अभी भी कहीं किसी के साथ नहीं. However, the picture of the Swan has survived. Swan picture है हमारे साथ. The layout of the open-air arena featured the pit or the yard. It also has raised stage at one end and is surrounded by 3 tiers of roofed galleries with balconies overlooking the back of the stage. Okay. Anglo superiority. This will be our last topic. Okay, we will not discuss anymore about Shakespeare's theatre, but this will be the last one. Anglo superiority. This censorship was probably why Shakespeare portrayed foreigners in a bad light. Okay, examples: the Merchant of Venice. Portia's coming on her sweater in Act Fast in Scene 2, based on a common stereotypes. Okay, this was based on a common stereotypes. Portrayal of Shylock is the villain. Okay, Portia's comment on Morocco in Act 2, Scene 7. May all of his completion choose me so. Act 1 and Scene 2. I rather he shrive me than wife me. Okay, I rather he shrive me than wife me. This was his Anglo superiority. Okay, this was how Shakespeare portrayed foreigners. Okay, in a very bad light. Okay, so
This was all about Shakespeare Theatre, and I think this is enough. So thanks for watching the video.